Good morning, students. Welcome online classes. Previous class we had already discussed about the definition of grammar. Today we are going to discuss the first chapter of class 4th and 5th, that is sentence. पिछली क्लास में हम लोग ग्रामर के डिफिनेशन को, व्याकरण के डिफिनेशन को जाने थे. टुडे वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 4th एंड क्लास 5th. आज हम लोग क्लास 4th के फर्स्ट चैप्टर को, क्लास 5th के फर्स्ट चैप्टर को हैंडल करेंगे. सो फर्स्टली वी टेक द शॉर्ट रिवीजन. पहले हम लोग छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द ग्रामर? क्या समझते हैं ग्रामर से? व्याकरण किसे कहते हैं? सो सिंपली यू कैन रिप्लाई द आंसर इन सिंपली वे. ग्रामर इज ए साइंस that teaches how to read, write, speak English correctly. Only this much. All of you learn by heart this question. Then today we are going to discuss about sentence. Sentence किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? Sentence is a group of words that makes complete and clear sense. That is known as sentence. Only this much. सेंटेंस हम उसे कहते हैं जो शब्दों का एक समूह हो जिसमें कर्ता क्रिया समाहित हो. उसे हम सब्जेक्ट, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. सो ऑल ऑफ यू लर्न बाय हार्ट. सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट एंड क्लियर सेंस. दैट इज नोन एज सेंटेंस. देन आई विल प्रोवाइड हियर some feature of sentence. How can you recognize the sentence? What is the characteristics of sentence? Sentence के क्या गुण होते हैं, क्या बनावट होते हैं, उसके बारे में जानें. Sentence, you have already know it. Sentence is a group of words that makes complete sense. That is the first characteristics. Second characteristics, sentence always begin with capital letter. Any sentence, when you write Ram is a good boy, so first word R you write capital letter. That is the characteristics, that is the feature of sentence. Sentence, when you write any sentence, the first word you write capital letter. Then second feature of the sentence, when you complete the sentence, at the end of the sentence you put, there is the full stop और एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क. क्लियर? सेंटेंस का जो बनावट होता है उसकी बनावट ये है, सेंटेंस के अंदर कर्ता होगा, मेन वर्ब होगा. सेंटेंस की दूसरी बनावट है, सेंटेंस जब हम लिखेंगे पहला अक्षर कैपिटल लेटर होगा. देन सेंटेंस जब कंप्लीट होगा उसके अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क यू हैव सीन, आप वहां पे देखेंगे. ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल, दैट इज ए सेंटेंस. ये सारे गुण अगर पाए जाते हैं वाक्य में तो वो एक वाक्य, एक सेंटेंस कहलाएगा. देन नेक्स्ट पॉइंट इज दिस. सेंटेंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, that is your subject and predicate. सेंटेंस के दो भाग होते हैं. I am talking about parts, not I am talking about kinds. हम यहाँ पे पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं. सेंटेंस हैविंग टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. देन क्वेश्चन इज दिस, what do you understand by the word subject and what do you understand by the word predicate? Subject, simply we can say that subject is the first part of the sentence and predicate is the second part of the sentence. For the example, Ram is a good boy. Ram, in this sentence, Ram, so that is subject, and is a good boy, that is your predicate. Only this much. Then afterward, sentence having, there are 5 kinds. सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बेस पे
सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं. दैट इज योर assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, and last one is your optative sentence. All these kinds of sentence given in your book, and some description is there given. On the basis of structure, sentence is divided into 3 parts. That is simple sentence, compound sentence, and complex sentence. All these things not given at your book. So I will explain with the help of whiteboard. All of you write it. Okay students, look at what is the feature of sentence. Sentence का बनावट क्या है? What is the feature of sentence? First one, it begins with a capital letter. Any sentence, when you start writing at the beginning point, there should be capital letter. Then afterward, second point, it ends with full stop. किसी भी सेंटेंस का जब अंत होगा, तो सेंटेंस के अंत में देयर इज एनी पंचुएशन मार्क, तो वहां पे कोई ना कोई पंचुएशन मार्क होगा. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज द फुल स्टॉप, देयर इज द exclamation mark, and there is the question mark. So all these characteristics fulfill that is comes under the category of sentence. अगर ये सारी चीजें सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं तो उसे हम एक सेंटेंस मानेंगे. क्लियर एवरीबॉडी? सो ऑल ऑफ यू नोटेड इट. So look at, every sentence has divided into 2 parts. First one is your subject and second is your predicate. हर एक सेंटेंस को 2 भागों में बांटा जाता है. फर्स्ट वन इज नोन एज, फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट predicate. So question is this here, what do you understand by the word subject and what do you understand by the word predicate? सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं? सो लुक एट, डिफाइन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इज नोन एज सब्जेक्ट, एंड प्रेडिकेट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. फॉर द एग्जाम्पल, सो राइट इट. सो इफ क्वेश्चन विल कम, डिफाइन प्रेडिकेट, क्वेश्चन ये आता है प्रेडिकेट को डिफाइन करिए. सो प्रेडिकेट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ओनली दिस मच. एग्जाम्पल हियर, राम इज ए गुड बॉय. इन दिस सेंटेंस राम comes under the category of subject and rest part comes under the category of predicate. Only this much you can learn it. So write it. Okay, look at next question is this, how many kinds of sentence? Sentence के कितने प्रकार होते हैं? There are 5 kinds. Some books given 4 kinds. Doesn't matter. So there are 5 kinds of sentence. First one is your assertive sentence, then afterward imperative sentence, then afterward interrogative sentence, then afterward exclamatory sentence, last one is your optative sentence. You learn by heart all these kinds of sentence. Clear? So look at once again. Assertive sentence is also known as statement sentence. Assertive sentence is also known as declarative sentence. Don't be confused. Assertive sentence का ही नाम है statement sentence, declarative sentence. आपको यहाँ पे confuse नहीं होना है. Imperative sentence, इच्छा सूचक वाक्य. Then afterward interrogative sentence, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं. Exclamatory sentence, विस्मयादि बोधक वाक्य. Then optative sentence, इच्छा को इसमें जाहिर की जाती है. So
You learn all these kinds of sentence as soon as, जैसे भी हो ये सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस आप लर्न करिए, याद करिए. सो वंस अगेन आई विल रिपीट होल थिंग्स, दोज थिंग्स टॉट टूडे टू ऑल ऑफ यू, जो मैंने आज आप लोग को पढ़ाया. एक बार पुनः मैं रिवाइज करता हूं. सो फर्स्टली आई हैव ऑलरेडी गिवन द इंस्ट्रक्शन. Define sentence. So, very simple. Sentence is a group of words that makes complete and clear sense. That is known as sentence. Then next part. Next question is this. How many parts of sentence? Sentence mainly having there is two parts. Subject and predicate. Only this much. Define subject. Subject, that is the first part of the sentence, is known as subject. Predicate, that is second part of the subject, is known as predicate. Then next point, how many kinds of sentence? Sentence के कितने प्रकार हैं? There are 5 kinds of sentence. There is assertive sentence, interrogative sentence, then there is the imperative sentence, exclamative sentence, and there is the optative sentence. So all of you learn by heart. Next class, I will explain all the kinds of sentence one by one in detail information. So, those students don't know about the online classes, please inform as soon as join the online classes. And homework is this, all of you learn by heart all the definition of what is sentence, what is predicate, what is subject, how many kinds of sentence, all of you learn by heart. Next class we will discuss definition of all these kinds of sentence. इनकी definition के बारे में next class में हम discuss करेंगे. So all of you write all these important topic at your fair copy. So we'll meet next class.